हेलो दोस्तों, मैं आर्ट लेवॉय से और आज मैं एक बहुत ही महान कलाकार और बहुत ही महान भगवान के भक्त श्यामारानी देवीदासी और जादूरानी देवीदासी माता जी उनका नाम है, उनकी जो बायोग्राफी पेश करने के लिए आया हूँ। और आपने हाल ही में एक पिक्चर देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी को बीबीटी आर्ट बुक गिफ्ट कर रहे हैं श्यामारानी माता जी, और कोविंद जी को भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, और पेंटिंग्स गिफ्ट कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली श्यामारानी देवीदासी माता जी हैं। और वो है कौन एक्चुअली में? तो आपने कभी भी इस्कॉन टेम्पल विजिट किया होगा, आपको बहुत सुंदर सुंदर कृष्णा की पेंटिंग दिखाई देती होंगी। और जो भागवत गीता एज इट इज़ जो इस्कॉन की बुक है और दूसरी बुक्स हैं, उसके ऊपर भी आपको बड़ी सुंदर सुंदर आर्ट दिखाई देती होगी, स्पिरिचुअल आर्ट। तो वो स्पिरिचुअल आर्ट एक्चुअली में श्यामारानी देवीदासी माता जी द्वारा बनाई गई है, और आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो श्यामारानी देवीदासी माता जी जो हैं वो 1966 में श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनसे उनकी भेंट हुई थी। और हुआ ये था कि वो एक कीर्तन चल रहा था, तो उन्होंने एक कीर्तन देखा और वो कीर्तन उन्हें बहुत ही स्पेशल लगा और वो थोड़ी देर रुके। तो एक डिवोटी उनके पास आया और उन्होंने पूछा कि आप और ज़्यादा जानना चाहेंगे जो ये फ़िलॉसफी है। तो वो एक नॉर्मल न्यूयॉर्कर थे जो श्यामारानी देवीदासी माता जी थे। उनका नाम जादूरानी देवीदासी रखा गया था पहले। तो वो एक्चुअली उन्होंने देखा और उनको बहुत ही अच्छा मतलब फील हुआ, और उन्होंने कोशिश करी कि वो इस्कॉन के साथ और जुड़ें। तो वो श्रीला प्रभुपाद के पास गए और उनसे मिले, और एक बार उनके कीर्तन में उन्होंने पूछा कि श्रीला प्रभुपाद जी ने कि भाई आपका टैलेंट क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना लेती हूँ, बचपन से ही मैं आर्ट वर्क करती हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि क्यों ना भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जाए और पेंटिंग्स बनाने की। तो पहले क्या होता था कि डिक्टाफोन होता था, और डिक्टाफोन से जो है श्रीला प्रभुपाद उनको भेजा करते थे, और उस फिलॉसफी को, जो एक ट्रेडिशनल फिलॉसफी है, उसको वो सुनते थे और उसको सुन सुन के उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। और जैसे पत्राचार होता था पहले, क्योंकि पहले व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था, तो यही माध्यम होते थे। तो इस माध्यम से ही उन्होंने श्रीला प्रभुपाद की जो लेक्चर हैं उनको सुन सुन के, और जो परंपरागत फिलॉसफी चली आ रही है उसको सुन के जो है उन्होंने फील करके एक समझ लो कि एक दिव्य आंखें जो उनको मिली, एक तरीके से स्पिरिचुअल आइज जो उनको मिली, और एक विज़न मिला, जो स्पिरिचुअल विंडो मिली उन्हें एक गोलोक धाम की। तो उन्होंने वो सोच सोच के पिक्चर बनाई हैं, और बहुत ही सुंदर आर्टवर्क हैं, आपने देखे होंगे। और एक बार की बात है कि श्रीला प्रभुपाद बैठे हुए थे, उनके बेड के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी। तो जादूरानी देवी माता जी कहते थे कि मैं ये पेंटिंग देखना चाहती हूँ। तो लेकिन वो उस पे, उनके बेड पे वो पैर नहीं रखना चाहते थे। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि बेड पे पैर रखने हैं तो दूर की बात है, आप मेरे सिर पे भी पैर रख सकते हो, अगर कृष्ण की सेवा के लिए अगर कोई आप काम कर रहे हो। तो ऐसे तो उनके जो गुरु थे, और उनके गुरु की जो दी हुई लेक्चर्स हैं, उसकी जो फिलॉसफी है, एक स्पिरिचुअल आइज समझ लो, उसको सुन सुन के उन्होंने ये आर्टवर्क बनाए हैं। और आप इन आर्टवर्क में देख ही सकते हो कि कितना एक रियलिस्टिक वर्क है, ये सुपर रियलिज्म कह सकते हो। और एक रियलिस्टिक बात तो होती है, लेकिन कई बार पेंटिंग बहुत रियलिस्टिक होती हैं, पर फिर भी वो मतलब उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती, हद से ज़्यादा रियलिस्टिक होने के बावजूद भी। लेकिन इन आर्टवर्क की स्पेशलिटी ये है कि रियलिस्टिक होने के साथ साथ बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने देखा है उन दृश्यों को और देख के बनाए हैं। जैसे कि आप ये पेंटिंग देखो राधा कृष्ण की और चैतन्य महाप्रभु की पेंटिंग्स जो हैं ये देखो आप, और ये जो कृष्ण लीला के तरह तरह के जो उन्होंने सीन बनाए हैं और लीलाएं बनाई हैं भगवान कृष्ण की, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने देखा है साक्षात। तो इतना रियलिस्टिक लगता है, इतना पॉजिटिव, इतना स्पिरिचुअल फीलिंग है इन आर्टवर्क्स के अंदर। तो बहुत ही महान कलाकार थे, और 1966 से लेकर 1991 तक ये काम करते रहे हैं उनके लिए। और अब मैं क्या बोलूँ मतलब इनके बारे में, आप इन्हीं के मुँह से इनकी खुद की जर्नी सुनिए।
तो ये वीडियो जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप ये वीडियो देखिए और इनकी जर्नी सुनिए। और मेरा चैनल है आर्ट लेवॉइस, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। My name is Syamarani Dasi. Dasi means servant. So my name means that I'm a servant of Syamarani, the feminine counterpart of the Supreme Truth, Krishna. Before I discovered Krishna consciousness, I was a normal, everyday New Yorker. I had never heard of Krishna consciousness before. When I was 19, I met my spiritual master, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I left the house in the Bronx, Upper Bronx, and was on my way to a friend's house, and I heard bongo drums and cymbals, but there was something very mystical that day about the music. So I went further into it, and I saw Prabhupada sitting in the middle of an Indian rug, and his disciples, he had about 10 disciples with him, dancing around him on the rug like this. My first impression was that he looks like a genie flying in on a magic carpet. And then when they packed up, rolled up their rug and left, I was just standing there starry-eyed, not knowing what to do or where to go, and some strange man came up to me and said, "Would you like to go to the temple?" I said, "Sure," without knowing what that was. And without becoming a devotee, nobody can be intimately related with Krishna. Just after about a month or so, after I joined, one of the monks came down and said, "The Swami wants to know what your talent is." So I always liked art since I was a kid, and I would draw all kinds of crazy drawings when I was a kid. So I said, "Well, I guess my talent is art." So then he told Prabhupada, and then Prabhupada immediately called me to his quarters and gave me a picture of a chanting party. Prabhupada asked me to make a large copy for the temple walls, and I was so honored. So my main services were painting, and first decorating his temples with different pastimes of Krishna at different ages. And then 1969, he began engaging me in painting for his books. So before the books were printed, he would dictate the book on a dictaphone machine and then mail me the dictaphone tapes so that I could hear what was going to be in the book at the very beginning, so that at first he picked out the pictures for the books, and then he said, "Okay, now you can pick them out." And a few other artists joined, and we acted as a team, each with our own paintings. Sometimes we shared working on a painting together. During the course of my painting for Srila Prabhupada, I received 90 letters from Srila Prabhupada answering our questions. One of the pictures that I received a lot of guidance for was one of my early paintings of Krishna's half lion, half man incarnation, Lord Nrsingadev, ripping apart the evil father of a 5-year-old saint named Prahlad. The picture was so small that I couldn't see details. So Srila Prabhupada personally posed for Lord Nrsingadev like this. And he crossed his eyes, and as you all know, it hurts a lot to cross the eyes, but he did it anyway. When the picture was almost all done, he saw that I had a few drops of blood in the painting. So he said, "Few drops?
better to have blood everywhere, because if God is not ferocious, then where does ferocity come from? And then at the very end, as I mentioned, because the picture was so small, he was sitting on a rug, and it was an Indian rug, but with zero details. So I remembered that there was another Indian picture on his wall, like to his right and up there on his wall, where he would sit and do his translation work. So I went in that room, which was just right next to the room where I painted. And I was kind of jumping up and down, like trying to see. So he said, "What are you doing?" I said, "Well, I'm trying to see the picture, but I don't want to step on your bed." He was so humble, he just slept on a second-hand mat. So then he said, "In Krishna's service, you can step on my head," showing, immaculately the pure devotee's humility. In 1977, Srila Prabhupada left the vision of the mortal world, thus leaving his followers in an ocean of grief. Devotional service, and it's meant for worship, it's meant to be a part of the process of bhakti yoga. So it's not created with any kind of intention of monetary benefit or seeking fame as an artist or even self-expression as an artist. It's completely done with the aspiration of becoming a vessel, a channel for self-realization, for pure love to transmit through the canvas the pure vibration of the spiritual world to anyone who sees it. It doesn't require any prior base of knowledge or cultural context. And now I've almost completed my final painting called Kunja Kirtan. I don't have time to do another painting after this, so this is my final. And because it's the final, I'm throwing a lot of heart and energy into it, a lot of details. There's a saying by some famous artist, "Life is short and art is long." So I've been working on this on and off, of course, since 2010. When I'm in the middle of a painting, and then I have a deadline for that day. Okay, I'm going to do 2 bracelets, 3 arms, 1 eye, and then I'm able to do it. This is going to take me a half hour, this is going to take me an hour. But with this, it's absolutely zero control. So I know that they're coming, the personalities in the painting are coming when they want to come, how they want to come, and it has nothing to do with my endeavor. Every single stroke, I have to just say, "It's up to you." And if I don't, if I try to be the doer, then nothing happens. The subject matter of this painting is very interesting. It's a manifestation, a window to the spiritual world, Srila Prabhupada called it, of singing and dancing and playing musical instruments and the glorification of Krishna. Jadurani is in the center. Her friends are all called gopis, or cowherd girls, and Krishna is there sitting at her feet, totally enthralled with the music and with her. It seems to be a re-explosion of the Krishna consciousness movement now, with the extreme popularity of kirtan, the singing of Krishna's holy names. And this painting shows the origin of all of that singing and dancing and playing musical instruments. Srila Prabhupada told me right at the beginning, Krishna's philosophy must be illustrated, but it must be according to the succession of teachers and scriptures coming from Krishna for thousands of years with no change. Just like the philosophy can't have change in order to be powerful, so similarly art has to fit exactly the philosophy. The aim of the paintings is so that when people see them, their consciousness will transform and they will become devotees of the Lord. That is our aim. Prabhupada said that he wants the paintings to support the society. So because of these pure and selfless, loving intentions that are behind the creation of the art, it's actually priceless. The profits all go to
distribute free books in needy areas. Srila Prabhupada told me right at the beginning, this art will be like the rain after the drought of mundane art, and everyone will be attracted.